विराट हिंदुस्तान संघटनम् विश्वं कुर्यानीडमेकम् प्रथममस्तु आत्मशोधनम् हिन्दू बन्धूनां परिचयम् राष्ट्रभारत्यः अस्तु द्वितीयम् इतिहासस्य सुष्ठु रक्षणम् विराट हिंदुस्तान संघटनम् विश्वं कुर्यानीडमेकम् आद्य कर्तव्य द्वितीयम् संस्कृत साहित्यः पुरसारणम् हिन्दू हितार्थ आवश्यकमिदम् संस्कृतवाण्यः सुरक्षणम् सर्वजनैस्तु आत्मस्वरूपम् मनसा बुद्ध्या परीक्षणीयम् अर्थार्जनस्य धर्माधारम् दृढ भवतु ज्ञेयं चतुर्थम् पञ्चेतड राम राज्यं सुराज्यं राज्य प्रजानां निश्चयमेकम् इदं पञ्चकं भवतु ध्येयम् विराट हिंदुस्तान संघटनम् भारत माता की जय। Namaskar. Here we welcome all our Zoom participants and all YouTube viewers for this VIRAT ABHYASIKA. And we welcome our guest speaker, Mr. Nikhil Kotian ji. Nikhil Kotian sir, we welcome you for this VIRAT ABHYASIKA. And here you are going to enlighten us on the subject of Pandharpur Act and challenges related to temples. Before that, I will give a brief introduction about our guest speaker. Shri Nikhil Kotian has 15 years experience in social impact. He started with healthcare, governance, then education and rural development. He was the founding member of Doctor for You, an NGO working in the field of healthcare, and also founding member of Lifesavers Club. He is passionate about understanding the challenges of temple under government control and dedicated to freeing temple from government control. And he is very active member of our Virat Hindustan Sangam, and at the same time he is working with Dr. Ajay Sankhe ji on Pandharpur temple issues since 2019. So once again I welcome Nikhil Kotian ji, and please enlighten on this subject matter. Thank you. Thank you. So I would like to thank Dr. Ajay Sankhe for inviting me to speak on this topic. This topic is not only dear to me, and we've been working on this for some time. I'll just share the screen right now. Okay, so for people who are not aware, a little bit of background. So we've been doing background work on the Pandharpur issue for quite some time. And if most of you all may be aware that recently Dr. Subramanya Swamy tweeted that he is going to take up the Pandharpur temple issue, and that Dr. Sankhe along with the legal team will be visiting Pandharpur. So that's in the very recent past that this announcement was made. So with this background, Dr. Sankhe wanted that we speak on this topic, so that since we are going to file a legal case very soon, that more and more people become aware of what the situation is in Pandharpur and in general when it comes to government control of temples. So before I start my talk, would like to pray to Vittal Rukmani so that he bless all the team that is involved with this Pandharpur issue to make this a success.
So broadly, I'll be covering the brief history of government takeover of temples, then specifics of the Pandharpur Temple Act, and the way forward to freeing our temples. So this uh, will be applicable to basically all the temples. So from the example of from what we've learned when it comes to doing the groundwork on Pandharpur, and then this same lessons can be applicable to people who are interested in freeing other temples. So this is what the basic, you can say, a quick rundown of how things started. The premise has always been mismanagement. So in 1817, the East India Company, not the British government, the East India Company came with the Madras regulation, where quoting mismanagement, they started taking over temples and temple property. And gradually, around 1863, there was a lot of noise in opposition to this takeover, saying that how can Christians take over or run pagan institutions. So around 1863, they handed over the temples back to the local devotees. But then again in 1927, when the freedom struggle was also had caught a lot of pace, so to try to curtail people gathering to temples and trying to control all its activities, the British government came up with the Madras Hindu Religious Endowment Act. And you can say, in one sense, since we are all witnessing we are going through in Corona, so that was the original variant of the temple takeover that mutated into the Madras Hindu Religious and Charitable Endowment Act, and then the latest variant is the 1957 Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowment Act was struck down by this High Court and Supreme Court. The, there were a lot of unconstitutional provisions within those acts, but then those provisions were taken out, and in 1959 you got this current variant of Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowment Act. And all the rest of the states, since the Madras presidency also had areas from Karnataka, Andhra, large parts of Tamil Nadu, Kerala, and then Karnataka. So this act was basically copy pasted, or some version of those. This act was adopted within all those southern states to begin with. So this is the basic history of government takeover of temples. So these are the numbers I could find on the internet. So these are the current number of temples under government control in Tamil Nadu. So this is the official government number on their website. So it has around 44,301 temples under its control. The Andhra Pradesh government has 24,632, and the Kerala government has under almost around 3,000 temples under its control. Which in Kerala they have a different system where they've created regional boards rather than just one body looking after everything. So now, since we are discussing about the Pandharpur Temple Act and the working on the temple issue at Pandharpur, so let us go back to where it all started from. So basically, a Nadkarni Commission of inquiry was instituted in 1968. This was to broadly look into the public grievance and mismanagement. And they broadly quoted grievance regarding darshan, situation in temple during Ashadi Ekadashi, abuse of privilege, demand and harassment on ordinary days. So on these grounds, the Nadkarni Commission gave a slew of, you can say, suggestions, and basically it is the commission that recommended that the hereditary rights should be abolished. So in one sense, it is unfair
that because of the action of few, the hereditary rights of the entire communities worshipping Vittal and Rukmani was taken away. For example, if we look at, if anybody's been to Jagannath temple recently, some may have unpleasant experiences, but those experiences are connected to few individuals that you come across. Because in Puri itself, there are almost 26 families that look after different sevas, from prasad seva to dressing, various to making flowers, making garlands for Jagannath. So just because you have a bad experience with few of them doesn't make that you take the hereditary rights of all these people who've been sincerely serving Jagannath. So in this case, it happens to be Lord Vittal, whose hereditary Sevaites lost all their, you can say, rights. So under this background, the Pandharpur Temple Act of 1973 was formed, and the very first paragraph, you can see what the intention of the act is. An act to provide for the abolition of all the hereditary rights or the priestly class of in the temple of Vitthal and Rukmani, and for providing better administration and governance of these temples. So this is the very first para. They've made it abundantly clear what this act is about. It's about abolition of hereditary rights. We can understand if they've identified some malpractice and then rectify it and give it back. But you can see, you can evil intention behind abolishing the hereditary rights of the priests of Vittal and Rukmani. Whose rights were abolished? So basically, there are these communities that serve Vittal and Rukmani, the Badwes, the Utpats, the Sevadharis, the Kshetropadhyayas, the Kolis, and within the Sevadharis, there are again multiple communities that undertake different sevas. So all of their rights were taken away, and a separate committee was instituted in its place to look after all the activities. So I'll just quickly go through some sections of the act. So I want to tell the act because the first para it explains what we're dealing with. I would focus more on what action we are taking and how we can go forward when it comes to freeing other temples from government control. So, Chapter 2, Section 4.1b says that receiving, demand, and appropriate the income of from the temple, including their respective parivar devtas. So, basically, they've taken away the right for the brahmanas to receive offerings or dakshina from people who come visit the temple, not only from Vitthal and Rukmani, but including their respective parivar devtas. Now, as Hindus, we all have our parivar devtas. Now, they've abolished the right to those parivar devtas. This section. Nikhil ji, Huh. can you just put your video off because we are unable to hear you properly. Video, okay. Yeah, because the probably bandwidth is low. You can do that. That will be good. Okay. Are you able to see the presentation? Yes, a presentation is seen. Okay. So, in chapter you have 1.c that the committee will ensure the Nitya Seva, what was happening earlier. The committee is now responsible for undertaking all the sevas. In one sense, I put this section over here because a devotee taking care of Lord Vittal is different to somebody who's paid as an employee to take care of Lord Vittal.
you can't compare devotion and love towards Vittal to somebody who's just being paid. Now, say I'm having some regular service somewhere else, and then suddenly I've been appointed as a sevayat in the Pandharpur temple. So for me, it is the job. Like I've been doing job at place A. Now I've quit that job and now I'm doing a B. So I don't have any emotional connect. It's all about me earning my livelihood. A few more sections from this. This is basically how the committee is constituted. 11 members will be appointed, and the major criteria is that you just have to make a declaration. Your conduct, your faith in there is no way to assess it. So anyone can make a declaration. So that is a very flimsy ground to constitute this committee. And then there will be two members from the legislature, one MLA and one MLC. So this is how the committee was constituted. So now that we have a brief understanding of what the background was in terms of temple takeover of by the government and how it connects to the Pandharpur issue. So the priestly class from Pandharpur have fought this in the High Court, Supreme Court, and they're still trying to work a way around this. But basically, this act still stands, and we are challenging this act. Now, to go to some positives or some ray of hope where we can learn from or what we can use to in our Pandharpur case. So many people may be aware about the Chidambaram temple judgment. Before we jump to the judgment, I'll go through a couple of sections from the Constitution. One is Article 26, freedom to manage religious affairs. So this basically deals with right of a religious group or denomination to manage its own institutes, its own religious institutes, charitable institutes, to manage its own affairs of religion, to manage property, and to administer everything within the purview of law. And the second article from the Constitution, which is important for us going forward, is Article 31A, saving of law providing for acquisition of estates. So this is Article 31A, subsection B, the taking over of the management of any property by the state for a limited period, either in the public interest or in order to secure the proper management of the property. So this provision basically allows the government to take over any property, any private property or religious property, if it's brought to its notice that there is mismanagement or financial fraud, and the government is then supposed to rectify it for and then hand it over back. So it clearly mentions for a limited period, so it is not indefinite. So these two sections were important for the Chidambaram temple case. So we'll now go through the judgment, the important judgment of the Chidambaram temple case. So this was Dr. Swami versus State of Tamil Nadu, civil appeal number 10620 of 2013. Since this is important for us going forward, I'll read the entire thing. Even if the management of a temple is taken over to remedy the evil, the management must be handed over to the person immediately after the evil is remedied.
So the court is making it extremely clear that you can, the management has to be handed over to the trust or body that was handling it before, as soon as the evil stands remedied. Constitution thereof would amount to usurpation of their proprietary rights, violation of fundamental rights guaranteed by the Constitution in favor of the person deprived. Basically, if you continue to take or continue to manage the temples, you are basically trampling upon the fundamental rights. Therefore, taking over the management in such circumstances must be for a limited period. Thus, such expropriatory order requires to be considered strictly as it infringes fundamental rights of the citizen. So this is a very important para. This is from point 47. This is the first para. So the Supreme Court makes it very clear that governments can't take over temples indefinitely. So this is the second para. Supersession of rights of administration cannot be permanent, enduring nature, cannot be of a permanent, enduring nature. Its life has to be reasonably fixed so as to co-terminus with the removal of the consequence of maladministration. Basically, what they're trying to say is, if you've identified a malpractice, you need to fix yourself a time that and a reasonable time that I'll fix this in say 2 years, 3 years, and then hand it over back. So the government can't say now I'll manage this temple for 10 years and you've already resolved the issue within a couple of years. The reason is that the objective to take over the management and administration is not the removal and replacement of the existing administration. This is a very important part. But to rectify and stamp out the consequences of maladministration. Power to regulate does not mean power to supersede the administration for indefinite period. So these two paras out of the whole judgment, they hit across the point that temples can't be government for a period of time. If there is malpractice, we are supposed to, the government is supposed to rectify it within a fixed reason time and hand it over back to the original character. So way forward. Now, generally, there's a lot of talk around this subject about temple takeover, and it's it's seen very black and white that it's us versus the government. For most cases, it's true, but we need some more nuance when it comes to this issue. Now, immediately, the temples that come to our mind when we're talking about temple takeover, so Pandharpur is one temple, then Tirupati, Siddhivinayak. So all these prominent temples come to our mind, and we feel that government is in it to earn the hundi collection, earn the donations, siphon it off. So that is the immediate thought that comes to our mind. I've been talking to a Sri Vaishnav scholar from Tamil Nadu who's based out of Sri Rangam. So he deals with this issue directly. So he's been involved with administration of 9 prominent temples in India in the south, 9 Divya Deshams of, we can say, prominent temples of Lord Vishnu. And he says that there is another side to this. There are thousands of temples where there is no one to take care, where the hereditary priests, the current generation who are supposed to take care, they've moved on with their life or they've moved on to different careers and they are no longer interested in taking care of them, taking care of the temple or rendering their hereditary seva. And what happens is the older generation goes to the government and hands over the temple to the government, saying that we are not able to manage it. Now you please manage it. And this can be clearly seen. The government of Tamil Nadu recently came out with a report, I think a couple of years back or a year back,
So in nearly 12,000 temples that it manages, no puja was done because there was no revenue being generated by the temple. Basically, people are not going to those temples and uh, donating to those temples. 34,000 temples have only one person each per temple to manage all the affairs of the temple. And then 37,000 temples have revenue less than 10,000 rupees per annum. And this is something that should shock all of us, this final statement that I'll make. The report says 12,000 temples will die in the next few years. Basically, it will become defunct, it will become deserted, it will become a monument. The DT will not be taken care of because the government doesn't have the capacity, people are not interested. So this is the other side of this temple takeover. It's not only about the rich temples, it is about these temples that get neglected. So basically, what is our goal when we are talking about freeing temples from government control? So it's transfer of control and management by local devotees, restoring tradition, culture, and practices, and better management of temple wealth and endowment. So this is a plan of action template. Basically, you can apply this to any temple that you want to work on. So there is a wartime strategy and a peacetime strategy. What do I mean by this? Wartime strategies basically us coming together to free or to basically have a legal fight to get the temples out of government control. So that is an activity in itself. Then there's the peacetime aspect. Is once the temple is free from government control, how are we supposed to take care of it? What is the vision? What are the systems in place? So I'll go through both these strategies. So both of them require different skill set. So we're talking about temple specific action. You need to start with the team first, and then you need one dedicated person who will contact or network with the local priest, sevayats, and then you need to get all the previous legal documents. You need to record their traditional practices. You need to basically have the complete history of the temple from when it was before it was taken over by the government and after it was taken over by the government. So basically, the team will have to spend its time, energy, money if we are serious about freeing temples from government control, because we get a lot of noise. Everyone says ki we need to free temples from government control. At one point, advocacy is required, but advocacy has its own limitations. When it comes to action, it's a different ball game. When you actually have to put your skin in the game and get involved. So you're talking about having a legal team. You need a team for funds, donation, then collection and management. You need a team to do perception management, and you need to gather public support. This is the most difficult aspect going forward. It's firstly identifying the various stakeholders that we have to deal with, where we need to create systems in place after the temple is freed from the government control. One is the DT and the temple, the priests, sevaks, the devotees, and the state. So for the DT, we need to make sure that sevas are performed as per tradition without interruption, and all the festivals that are supposed to happen in the temple are happen according to what it's supposed to be. Then maintaining proper records of land owned by the DT temple, maintaining proper records of wealth and jewelry of the DT. For priests and sevaks, to establish a proper code of conduct and basic sadhana, to set up proper remuneration system,
proper training, education for future generation of priests who want to get involved with serving in the temple, serving the deity, and having a proper grievance redressal mechanism. And for devotees who go to have darshan, so we need to establish a proper code of conduct for them as well, because temples are not a tourist spot. There is proper etiquette, devotional etiquette, cultural etiquette which needs to be communicated. Basic stay and hygiene facilities need to be created. This is again very important. Opportunities to render service. When a devotee goes to a temple, we normally go to have darshan, but if we create an opportunity where he can serve in the temple, like cleaning, crowd control, making garlands, it could be anything, like cutting seva, vegetable cutting seva in the kitchen. So we need to create such opportunities for devotees to serve, and then imparting basic knowledge through books, lecture, and kirtan. Since I already pointed out, state also has some role to play. So we need to work out what is the minimum government assistance required. Say for a large temple, you will always require state control for law and order, then permissions for large festivals and gatherings, and then transfer of power from the state to local body. So post transfer of control, you need basically oversight committee, you need proper endowment management, you need to sustain ongoing projects and take up new projects for public welfare connected with Sanatan Dharma, setting up gurukuls with modern education for children of priests and sevaks. So this task may seem very Herculean, and this is actually what should be our mood of this child. In one sense, we are not, you can say, we may not have the capacity to directly serve the Lord, but it is His grace and mercy that He's letting us serve Him in whatever capacity. So we should develop the right mood when it comes to this issue. So not only for Pandharpur, for any temple that we want to free from government control, it's about developing the right mood. And I've tried to quickly go through all the points that I've had. If anybody has any questions, because this can be more engaging if we can discuss, because it's about getting us to participate. Because it's not just about a talk. Okay, I'm suggesting that request, Ajay Gadriji, that if you can make Mr. Mayur Badve, Virendra Upad, and there is Srimad Bhagavatvani, there is somebody. They are from Pandharpur. If they can say some few words. Bhagavatvani is Mahesh Maharaj. Yes, yes. Unmute करा आणि बोला जरा. मयूर बर्वे, भागवतवाणी. हाँ बोला. हाँ नमस्कार. तुम्ही हे आता जे काही शेअर केलं आहे त्याच्यावर तुम्ही काही भाष्य करू शकता, इफ यू कॅन गिव्ह युअर ओपिनियन. आपण हा करू शकतो. बोलू का? हा बोला ना प्लीज. हा मराठीमध्येच बोलतो. हो चालेल. आपण केलेला आतापर्यंतचा जो प्रयत्न आहे त्या प्रयत्नाला हिंदी मध्ये बोला महेश महाराज, हिंदी मध्ये बोला, हिंदी मध्ये. हाँ हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उस प्रयत्न को हमें फल बहुत मिल रहा है ऐसा दिखता है. केवल पंढरपुर टेम्पल का एक ही विषय नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया के सभी टेम्पल
सरकारीकरण से मुक्त होना अत्यंत जरूरी बात है। ये धर्म का, हिंदू सनातन धर्म के प्रतिनिधि के स्वरूप में मैं मेरा अभिप्राय रखना चाहता हूँ कि अभी तक जिस स्थान पर गवर्नमेंट ने जो टेम्पल अपने कब्जे में लिए हैं, वहाँ जो उद्देश्य है सनातन धर्म का, वो निष्कासित करने का ही उनका दिख रहा है। जिस कारण से टेम्पल गवर्नमेंट ने लिए हैं, वो तो कारण वहाँ नहीं दिखता। उन्होंने टेम्पल अपने कब्जे में लेकर सनातन धर्म की हानि ही कर दी है। जो कि एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। सभी विद्वानों को मैं नम्रता से कहता हूँ कि इसमें कोई गैर समझ न हो। मंदिर जब गवर्नमेंट कब्जे में लेते हैं तो वहां पर रूल कौन से चल आते हैं? जो गवर्नमेंट के सर्वेंट है वही रूल वहां पर चले आते हैं। अभी ये पंढरपुर का जो टेम्पल था हमारा, बड़े उत्पाद सेवाधारी लोग, ये ब्राह्मण मुहूर्त से शयनोत्सव जो है उस तक जो सेवा करते थे वो धर्म के आधार पर ही करते थे। लेकिन गवर्नमेंट के सर्वेंट, उन्हीं को ही धर्म का लेना देना नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ही पेमेंट लेते हैं। और जो मर्यादा गवर्नमेंट धर्म में रखा है, उदाहरणार्थ महिला के लिए कुछ मर्यादा रखी है, वृद्ध पुरुषों के लिए अन्य कोई मर्यादा रखी है, उस मर्यादा का उल्लंघन गवर्नमेंट के कब्जे में मंदिर जाने से होता है। ये बहुत बड़ी हानि है। संस्कृत में महाभारत में युधिष्ठिर भीष्माचार्य के संवाद में अपूज्य पूज्यते यत्र पूज्यो यत्र न पूज्यते तत्र त्रीणि भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम, ऐसा भीष्माचार्य ने युधिष्ठिर से उपदेश किया है कि जहां पर जिन लोगों ने पूजा करनी चाहिए है, अधिकारी पुरुषों ने, यहाँ पर अधिकारी पुरुष जो है वो अधिकारी पुरुष अगर पूजा नहीं करते और दूसरे अनाधिकारी लोगों से पूजा होती है, तब धर्म कहता है कि देश में दुर्भिक्षम मरणम भयम ये सभी चलता है। अभी अभी वास्तविकता हमें दिख पड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक हमला हुआ था पंजाब में, वो भय है, दुर्भिक्ष है, कोरोना का मरण प्राय सब लोग भोगते हैं। तो धर्म की हानि है यहाँ, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। इसलिए 7 वर्ष से ये मंदिर कब्जे में लेने के बाद 15 जनवरी 2014 को कब्जे में लेने के बाद ही भगवान ने एक उदाहरण वहां पर उपस्थित किया है। इस मंदिर में अभी तक तो कोई भी मरा नहीं था। मंदिर में एक बार एक पुजारी, सेवाधारी में बड़े के बाद पुजारी का स्थान होता है, वो पुजारी को उसके छाती में तकलीफ होने के बाद, सब पूजा संपन्न करने के बाद मंदिर के बाहर आने के बाद वो उसका देहांत हो गया। लेकिन यहाँ पर 4 अभी तक केस ऐसे मिले हैं कि मंदिर में ही देहांत हो गया है। ये जो धर्म की बाजू है, ये सत्य समझना चाहिए। ये बात धर्म की तरफ से मैं रखता हूँ। और सभी मंदिरों, जिस मंदिर में अन्यों को भी स्थान है लेकिन उनकी मर्यादा की तरफ से है। यहाँ पर रथोत्सव होता है तो सब वर्ग के लोग आते हैं। नागपंचमी के दिन शिराल षष्ठी बोलकर बहुत बड़ा उत्सव होता है, गौरी पंचमी बोलते हैं, वहां पर हम सब लोगों को शामिल करते हैं। सभी लोग आनंद से रहते थे। यहाँ थोड़ी बहुत गलतियां हो गई है, उस गलती को जो शासन मिलना चाहिए वो मिल गया है, अगर नहीं मिलता तो उनको मिलना चाहिए, यही हमारी बात है। लेकिन पूरे समाज को
और एक रूढ़ी को, एक संप्रदाय को खत्म करने का ठेका ये कांग्रेस गवर्नमेंट रहे या कोई भी सरकार ने लिया है, ऐसा यहाँ पर दिखता है। तो मेरी आपसे अत्यंत नम्रता पूर्वक विनंती है कि कम से कम मंदिर में जो प्रतिमा है उसकी सेवा तो हमें कम से कम मिलनी चाहिए। यही मेरी यहाँ पर यही मैं निवेदन यहाँ पर करता हूँ, यही बात रखता हूँ। और इसके लिए एक ही, जैसे भगवान श्री कृष्ण रणांगण में खड़े रहकर अर्जुन को उपदेश कर कर अच्छे मार्ग पर ले गए थे, वैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ही यहाँ पर सक्षम है। इनके अलावा मुझे तो और दूसरा नान्य पंथा अजनाय विद्यते, ऐसा मुझे लगता है। इनके सिवाय अन्य पंथा इस कार्य में कोई भी नहीं है। केवल और केवल सभी मंदिरों को सरकार की कब्जे से छुटकारा करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ही बलवत्तर है। भगवान विठल, श्री रुक्मिणी माता और परिवार देवस्थान के सभी देवतागण उनके कार्य में यश संपादन करे, ऐसी प्रार्थना कर कर मैं मेरा यह अभिप्राय यहाँ पर समाप्त करता हूँ। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। उत्पाद जी कुछ कहना चाहते हैं? निखिल जी। हाँ बोलिए वीरेंद्र जी। मैं निखिल जी, हाँ जो आपने कंक्लूजन बताया थोड़ा हिंदी में बता सकते हैं वो कि सब जो लोग हैं हमारे इधर के वो सब इंग्लिश नहीं जानते, तो थोड़ा कंक्लूजन बताओ और हम क्या करने वाले हैं उनको थोड़ा सा पता चले, ये रिक्वेस्ट है। अभी जैसे डॉक्टर स्वामी ने पिछले साल ट्वीट किया था कि वो अभी ये पंढरपुर इशू लेने वाले आगे, और डॉक्टर सांके को वो ट्वीट में लिखा था कि डॉक्टर सांके और लीगल टीम अभी पंढरपुर जाएगा और ये हम मुद्दे को आगे बढ़ाने वाले। तो उसी सिलसिले में हमने ये आज डिस्कशन रखा ताकि हम थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री समझे पंढरपुर टेम्पल एक्ट का, ताकि लोग भी जाने कि क्या है और हम क्या करने की प्रयास कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी कैसे हम युद्ध की घोषणा जैसे कर रहे हैं कि हम को पंढरपुर मंदिर गवर्नमेंट कंट्रोल से निकालना है, तो उसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे तो इसमें बहुत लोग का साय लगेगा, पंढरपुर से लोगों का साय लगेगा, ये वारकरी संप्रदाय से हमको मदद लगेगी, क्योंकि हम हमारे तौर पे लीगल टीम तैयार करके हम लीगल बैटल तो लड़ेंगे, लेकिन वो तो सिर्फ एक चीज हुआ। हमको एक समाज के संगठित होना पड़ेगा कि हम मिलके एक गवर्नमेंट को भी एक क्या बोलते पॉइंट रख सके कि हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे देवस्थानों को कंट्रोल करे। तो यही है बेसिक बैकग्राउंड जो हम जिसको लेके काम कर रहे हैं। धन्यवाद निखिल जी। डॉक्टर संके, वुड यू लाइक टू ऐड? तो प्रश्न है तो पूछ लीजिए ताकि देन वी कैन कंक्लूड। If anyone wants, अभी let us take some questions. There was one question in the chat. हाँ, वो ये था, the states have right to bring in the act under Constitution of India, if yes, under which list? तो मैं हिंदी में ही जवाब देता हूँ। बेसिकली सवाल ये है कि स्टेट्स के पास राइट्स है कि वो ऐसा एक्ट कानून बना सकते हैं अपने अपने राज्य में। तो मैंने आपको अभी जो प्रेजेंटेशन में 2 प्रावधान दिखाए कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर आप उसके हिसाब से देखेंगे तो ये पंढरपुर टेम्पल एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि नाडकर्णी रिपोर्ट ने अगर बोला कि मैल प्रैक्टिस हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज सपोज टू बी रेक्टिफाइड एंड हैंडेड ओवर। मतलब अगर कोई गलत काम हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि
प्रॉब्लम को ठीक करके वापस हैंड ओवर करे। और दूसरा सेक्शन जो गवर्नमेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया कि हेरिडिटरी राइट्स हटा देना, बिकॉज एवरी डिनोमिनेशन, हर संप्रदाय को हक है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू मैनेज इट्स ओन इंस्टीट्यूट्स। तो इफ अगर हम ये स्पेसिफिक पंढरपुर टेम्पल एक्ट के हिसाब से अगर ये सवाल देखते हैं तो इट इज एक्चुअली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एनी अदर क्वेश्चन? मुझे एक क्वेश्चन था। Am I हाँ audible? अभिषेक जी, क्या Yes. तो हाँ. कैसा, तो ये जो टेम्पल फ्री करने का मूवमेंट है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट से काम करेंगे कि कैसा? क्योंकि जितना मुझे मालूम था कि जैसे शनि शिंगणापुर हो गया, पंढरपुर हो गया, ये सब मंदिर तो फडणवीस के रोल में भी उन्होंने अपने कंट्रोल में रखे थे। तो इसका क्या इंडिपेंडेंटली जाएंगे कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट लेंगे? I think Dr. Sankhe can answer this better. No, we will not be taking political party supports. We are going directly to the people. लोग ही, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है और ब्यूरोक्रेट्स, ये दो जो सिस्टम्स है, दे वेरी डिफिकल्ट टू monitor them or take them as trustworthy. सिंपल भाषा में कह रहा हूँ कि इनको, इनके ऊपर से जो ट्रस्ट है पब्लिक का, it's not an easy thing. So better we just go from the constitution point of view, and the people will, just like उत्तराखंड में जो हुआ, एक लीगल साइड से बात की गई, और जो पब्लिक का ओपिनियन था, पब्लिक जो आउटक्राई था, जो आंदोलन था, दोनों के प्रेशर से politicians will fall in line. So that is our strategy. I don't think we should go to any political party now. Thank you. I have one question, निखिल जी. हाँ बोलिए राजीव. ये टेम्पल गवर्नमेंट के हाथ से जब छूट जाता है, मतलब कोर्ट अगर जजमेंट देती है राइट्स तो जो फर्स्ट कमिटी बनती है उसमें वो कैसे गठन होती है, मतलब किस आधार पे कौन वहां ट्रस्टी बनेगा, या वो कौन वो कमिटी या वो मैनेजमेंट के अंदर आएगा, वो कैसे तय किया जाएगा? क्योंकि हमने कई बार पेपर में पढ़ा है कि कोई मंदिर के अंदर विधर्मी लोगों को भी मैनेजमेंट में लिया गया था, बाद में विरोध होने के बाद में उनको वापस खींचना भी पड़ा। तो फ्यूचर में अगर ऐसा होगा, जब पब्लिक डोमेन में जब आएगा सब, तो उसका ख्याल कैसे रखा जाएगा कि ये मैनेजमेंट के अंदर जो आदमी आया है वो हिंदू ही है प्रॉपर? तो इसके लिए जो आपने देखा, मैंने जो प्लान ऑफ एक्शन टेम्पलेट बनाया है, हाँ जी, उसमें काफी मैंने फोकस किया है कि हमें सिस्टम्स पहले से ही तैयार करने पड़ेंगे ये सब वीड आउट करने के लिए, क्योंकि आपको ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स तो सब जगह मिलेंगे। यस, लेकिन आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो, आपने सिस्टम्स, आपने ये सब चीजों के बारे में सोचा है, जैसे आपने एक फॉर एग्जांपल वो टेम्पल का एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा बनाया हो कि मेंबर्स का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, ये जब तक इसका पालन नहीं होगा तो वो आ नहीं सकते। अभी करंटली जो पंढरपुर टेम्पल एक्ट में ये है कि क्राइटेरियाज, तो वो आपका जो बेसिक ट्रस्ट और सोसाइटी का क्राइटेरियाज है ना डिस्क्वालिफिकेशन का, वो है। उसका रिलीजियस ग्राउंड पे मोरालिटी को लेके कुछ नहीं है। मैं बोलूं थोड़ा? हाँ एक मिनट, एक पॉइंट। हाँ, जैसे अभी मंदिर के कम्युनिटी में आप रहना चाहते हो तो आपको मीट ईटिंग, अल्कोहल, ये सब आप नहीं कंज्यूम कर सकते। कि अगर ये प्रावधान बना है तो क्लियर कट है, इफ समबडी इज देन आइडेंटिफाइड इंडल्जिंग इन इट,
he can no longer be part of the committee. तो ये जो मैंने प्रेजेंटेशन में सेकंड हाफ में इस पे ही फोकस किया कि ये एक्चुअली बहुत मुश्किल काम है, लीगल बैटल करके मंदिर छुड़ाना इज रिलेटिवली, आई विल नॉट से इजियर, बट कंपेयर्ड टू दिस इट इज इजियर. Yeah, that's true. हाँ वीरेंद्र जी, आप म्यूट हो. हाँ, ये जो है जब ये पॉजिटिव सब होगा तो आगे क्या करेंगे इसके बारे में एडवोकेट रानड़े जी से बात हुई है और एक रिपोर्ट हम बना रहे हैं कि जो परंपरा है उसमें बहुत सारे लोग हैं, सब जाति के, और जाति के से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सबको कुछ ना कुछ तो रोल दिया था ये भागवत संप्रदाय में और पंढरपुर टेम्पल के इस सब्जेक्ट में. तो जैसे शिरडी का है, उनका जो मंदिर है और उनमें इन्वॉल्वमेंट है सबकी, तो वैसा एक रिपोर्ट हम बना रहे हैं, उस पे काम चल रहा है. और वो आचार संहिता क्या होगी इसके बारे में भी सोचा है. तो जब ये जैसे काम आगे बढ़ेगा तो हम हमारे टीम से और बाकी के जो है इसमें इंटरेस्टेड लोग, उनसे डिस्कस करके ये हम रिपोर्ट स्वामी जी को और हमारे जो है सब लीगल टीम उनको पहले पेश करेंगे. राजीव जी, जस्ट टू ऐड टू व्हाट वाज बीइंग सेड, तो हम जब तैयारी कर रहे थे लीगल फ्रंट पे, Yes. तो हम ये भी, हमने जो ये सेकंड हाफ है पीस टाइम वाला कि कैसे मैनेज होगा, उसके लिए हमने एक स्पेशल सेशन रखा था अपना भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में, जहाँ पे पंढरपुर से जो प्रीस्ट थे, वारकरी संप्रदाय के एक दो रिप्रेजेंटेटिव आके हमने एक पूरा दिन ब्रेनस्टॉर्म किया जस्ट ओनली ऑन दीज इश्यूज. यस. तो हम इसको मतलब पहले से ही आइडेंटिफाई किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम गवर्नमेंट से छोड़ के इसको मतलब वापस एक खराब परिस्थिति में नहीं डालना चाहते. That's good. यस. या तुलसी जी हैज अ क्वेश्चन. निखिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. आपने बड़े अच्छे से पक्ष रखा है दोनों तरफ से, और डिबेट काफी लंबी हो सकती है. हमारे काफी सेक्ट है, संप्रदाय है जो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं. एट द सेम टाइम काफी जगह पे हमने मिसमैनेजमेंट भी देखा है, लेकिन वो सब में नहीं पड़ते. एक अभी डिस्कशन हो रहा था, मेरे पहले एक सज्जन जो ज्ञानी जी थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रखा, और उसके एक और डिस्कशन हो रहा था कि हमको पॉइंट्स ढूंढने. तो मैं जस्ट कंपेयर कर रहा था छोटे से टाइम में कि ये जितने भी मंदिर है तकरीबन वो सब रजिस्टर्ड है अंडर ट्रस्ट. अभी जस्ट फॉर कंपैरिजन, फॉर द आर्ग्यूमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इंडिया में इंडियन क्रिकेट लॉ करके कोई लॉ नहीं है. ये सब इंडिया की जर्सी घूम के पहन के घूमते हैं. कोर्ट में ये बोला गया है बीसीसीआई ने कि ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है. अच्छा, इसमें भी मेल प्रैक्टिसेस पाई गई थी, तो जस्टिस लोढ़ा कमीशन बिठाया गया था, और उनके जो फाइंडिंग थे वो काफी सरप्राइजिंग थे. फिर जो एसओपी जो इम्प्लीमेंट की गई वो भी काफी रिलेवेंट है. मेरे हिसाब से थोड़ा कंपैरिजन होना चाहिए लीगल ग्राउंड पे, क्योंकि मैं वापस कहता हूँ, जो ब्लू जर्सी पहन के घूमते हैं इंडिया का, वो INDIA ये वो करके, they are not officially authorized by the government of India, because there is no Indian cricket law. It is a private trust and it is not governed by
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जस्टिस लोढ़ा कमीशन के जो फाइंडिंग रिकमेंडेशंस जो थे, आई थिंक they should also be looked into, because we as a temple, as a trust also falls under the same category. बस मेरा इतना ही कहना है, बाकी काफी सारा डिस्कशन लीगल ग्राउंड पे होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तुष जी फॉर दैट पॉइंट। एक्चुअली ये भी एक पॉइंट है कि एग्जिस्टिंग ऐसे अलग सिस्टम्स को कैसे मैनेज किए गए हैं। एंड अनदर थिंग इज वी कैन ऑल्सो लुक एट एग्जिस्टिंग टेम्पल्स दैट आर बीइंग मैनेज्ड वेल, उनके क्या सिस्टम्स है इन प्लेस, so that can be another thing. मयूर बड़वे। नमस्ते सर। नमस्ते, बोला। हाँ हाँ, हिंदीत बोलू दे? हाँ बोलिए बोलिए, हिंदी में बोलिए। हाँ, मैं जरा थोड़ा इंटरनेट इशू के से जरा देर से कनेक्ट हुआ, इसलिए सब का मैं सॉरी कहता हूँ। और मेरा कुछ जो स्वामी जी ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में ऐसा बताया था कि अब जो एक्शन हो रहा है मंदिर का, जो टेक ओवर जो है, उसका गवर्नमेंट टेक ओवर कर ही नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट का रूल इसमें क्या रहना चाहिए, तो अगर एक आध सिस्टम में फॉल्ट है, अगर एक आध ट्रस्ट प्राइवेट सेक्टर में है, मंदिर का कुछ वो करप्शन का इशू है, उसका पूजा वगैरह नहीं हो रहा है अच्छे से, तो गवर्नमेंट का रूल उसमें ऐसा होना चाहिए कि उधर जाके उन्होंने समथिंग शॉर्टली पीरियड, they are very properly started same thing, they take over this temple or this committee, and after some time then उनको वापस वो फिर से वापस कर देना चाहिए। ऐसा कुछ प्रोविजन अब होना चाहिए, ऐसा स्वामी जी ने एक मुलाकात में बताया था। अब 5-6-7 साल हो गए हैं अंडर गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मंदिर टेक ओवर करके, फिर भी इधर का जो अभी इशू आ रहा है, इस सेम थिंग अंडरटेकर टेक ओवर इन गवर्नमेंट, जो हमारे ऊपर जो ब्लेम रखे थे, सेम ब्लेम अभी सेम उनका चालू है, लेकिन अब लीगल एक्शन कोई भी उन पर नहीं ले रहा है। एक पॉइंट है वैसा। दूसरा पॉइंट ऐसा है, अगर गवर्नमेंट कुछ उसमें लॉ बना के हमको वापस करते हैं, तब तक हम इनका इंतजार करना चाहिए, या एक कोर्ट मैटर के ही थ्रू हम इसका कुछ कोशिश करना चाहिए। इस पे जरा आप मार्गदर्शन कर सके तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। निखिल, यू वांट टू से? हाँ मयूर जी, एक्चुअली हमने ये स्पेसिफिक आप जो पॉइंट अभी उठा रहे थे ना, हम उस पे ही हमारा चर्चा हुआ। मैंने वो जो चिदम्बरम मंदिर के जजमेंट था, मैंने वो प्रेजेंट किया था, जिसमें वो स्पेसिफिकली कि गवर्नमेंट इंडेफिनेटली टेक ओवर नहीं कर सकती कोई भी मंदिर को। तो वो जो जजमेंट का पार्ट था, मैंने वो डिस्कस किया था। और दूसरा जो अभी करंटली पंढरपुर मंदिर को लेके हमारा क्या एक्शन प्लान है, वो ये है कि हम अभी गवर्नमेंट के लिए वेट नहीं करेंगे कि वो उनको बुद्धि आए और वो सामने से आके बोले कि हम टेम्पल वापस ओरिजिनल हेरिडिटरी पीस को वापस दे रहे। हम हमारे तरफ से लीगल बैटल के लिए तैयार हो रहे हैं, और इसके लिए अभी काफी बहुत लोगों को अपने को काम बहुत है, तो ये बस हम अभी शंख बजा रहे लीगल बैटल के पहले की। धन्यवाद। नहीं, अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी लॉ प्रोविजन किया है
वैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कुछ हो सकता है क्या? ये मेरा उसके पूछने का एक जरिया था या एक सवाल था आपसे, बाकी कुछ नहीं। उसके लिए या तो आपको या मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा ना। सही सही, निखिल धन्यवाद। जी, निखिल जी, एक बात यहाँ मैं रखना चाहूंगा कि कोर्ट के थ्रू हमें जजमेंट मिलता है तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि गवर्नमेंट 5 साल के बाद बदली भी जा सकती है। और डॉक्टर स्वामी जी का हमेशा यही विरोध रहा है। मतलब एक बार कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा था कि अगर हिंदुओं को मंदिर चाहिए तो हिंदू सरकार बनाए। ये भी एक परसेप्शन था इलेक्शन जीतने का। लेकिन उसमें ऐसा भी कई स्टेटों में हुआ है, जैसे राजस्थान देख लो, तो ऐसे काफी हिंदूवादी लोग हैं, लेकिन वहां पर सरकार हिंदूवादी नहीं है। तो उस वजह से अगर सरकार के ऊपर डिपेंड रह के अगर सरकार हमें दे भी देती है, लेकिन हमें कोर्ट के थ्रू इसको पक्का करवाना चाहिए। जैसे राम टेम्पल हुआ, जजमेंट आया फाइनल, अभी इसको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज नहीं कर सकता है। अभी वो मैटर 100% सॉल्व हो गया। अगर गवर्नमेंट करती तो दूसरी गवर्नमेंट आके वो अपना लॉ लगाती और अपने अपने हिसाब से कार्य करती। तो कोर्ट के थ्रू जजमेंट लेना और ये फाइट लड़के मंदिर लेना परमानेंट सॉल्यूशन लग रहा है। करेक्ट 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 करेक्ट। नहीं मतलब आपने जवाब दे दिया सवाल का। शंतनु has raised his hand. शंतनु, सर मेरा एक सवाल था। हाँ, Nikhil, do you know under what number the trust has been registered for the Pandharpur temple? So now earlier that there were multiple trusts. So the Budways had a different trust, the Utpat had a different trust. So all of that was, you can say, amalgamated, brought together and transferred to a committee. Now all the provisions are of that committee are connected to the Pandharpur Temple Act. अभी उसमें अगर ट्रस्ट के कोई प्रावधान यूज किए हैं तो ऑफ दैट आई एम नॉट अवेयर, बट दैट इज नॉट वेयर आर इशू इज एक्चुअली, मतलब दैट इज नॉट वेयर वी आर स्टक. That is actually for us it is immaterial going forward. I can try looking it up later, but I don't have that specific answer right now. Okay, no problem. संकेत सर जी, मेरा एक सवाल था. We can just have a small chat after this session is over with the VHS members. no problem. We can have a chat. Ishwar, you have some question? Ishwar, you have raised your hand. Either you lower it or you speak. I think it's Tejas. Okay, Tejas है क्या? Yeah. Tejas, you have raised your hand? Yes, Sanjay ji. Sorry, sir. उसमें विराट अभ्यासिका लगा दिया. Yeah. I thought it was So Tejas. there is actually a question on the YouTube where we are live streaming to Nikhil. Okay. So one of the YouTube user Makran wants to know that is there any way to prove the mismanagement of government in day-to-day routine? See, there are two things you can look at this from two angles. One is actually gathering evidence to prove that government is mismanaging. Second way of looking at it is it doesn't matter if the government has mismanaged or not. Say the government is managing it fine. We still don't want the government to be in control because the current government may be doing it proper as per the books. What about the next government? Because you always have one MLA or MLC. So these are basically, they'll keep on changing according to the ruling party. The point is valid that if there are any malpractices, we need to document that. And I'm sure people from our team from Pandharpur will have a lot of information regarding that. But irrespective of malpractice, our stand is we don't want government control in our temples. Thanks, Nikhil. Yeah.
हेलो। हाँ बोला, हाँ नमस्कार। निखिल जी, मुझे एक शंका थी। पंढरपुर एक्ट जो बनाया गया है, तो वो एक्ट उस महाराष्ट्र राज्य शासन को एक्ट बनाने का अधिकार है क्या? ये पहला प्रश्न था। उसको हमने चैलेंज किया, 2 बार चैलेंज करने के बाद भी वो दुर्दैव से सुप्रीम कोर्ट में हमारे विरुद्ध निकल गया। तो इससे ऐसा सिद्ध हो गया कि महाराष्ट्र शासन को टेम्पल एक्ट बनाने का अधिकार है। तो अब इसके आगे इसका खंडन सुप्रीम कोर्ट में ही होना चाहिए। तो इसके बारे में आप मार्गदर्शन करिए। महेश आचार्य जी, इस पे एक्चुअली थोड़ा और डिटेल्ड चर्चा होगा हमारा जब अपना लीगल टीम आ रहा है ना पंढरपुर, क्योंकि ये थोड़ा डीप विषय है, वो थोड़ा और लंबा चला जाएगा। वो स्ट्रेटेजी का है सब्जेक्ट, बराबर। तो वो बाद में हम डिस्कस करके ये करेंगे। आचार्य इथं डिस्कस करू शकत नाही, ते सांगतील आपल्याला. काय हरकत नाही आहे. So I just had some last parting comments before we close this session. अभी जो करंटली हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है पब्लिक सेक्टर कंपनीज को अंडर द आर्ग्यूमेंट दैट गवर्नमेंट इज नॉट सपोज टू और इट इज नॉट द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन गवर्नमेंट। कि आप अभी देखेंगे कि गवर्नमेंट जैसे एयर इंडिया, LIC को अभी प्राइवेटाइज कर रही है, ये बोल के कि गवर्नमेंट का काम नहीं है कंपनीज चलाना, बिजनेसेस चलाना। तो हम गवर्नमेंट को यही बोल रहे हैं कि आपका काम मंदिर चलाना भी नहीं है, तो आप उसको भी धीरे धीरे प्राइवेटाइज करना शुरू, मतलब प्राइवेटाइज वर्ड में अभी के लिंगो के हिसाब से यूज कर रहा हूँ, बट बेसिकली आपका काम मंदिर चलाना भी नहीं है, तो आप जो स्थानिक लोग हैं उनको आप मंदिर वापस दीजिए। ये हमारा एक सिर्फ पंढरपुर को नहीं, जो भी सब सारे मंदिर है उसको लेके यही एक हमारा मेन मुद्दा है। और इसको हम ग्रेजुअली गवर्नमेंट के साथ मिलके पीसफुली भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी एयर इंडिया, LIC के केस में तो एक इट इज नॉट ए लीगल बैटल, एक क्या बोलते हैं, सहमति पे आके ये कर रहे हैं, तो हम इस पे भी सहमति के साथ कर सकते हैं। लेकिन वही चीज है कि गवर्नमेंट को वो माइंडसेट लाना जरूरी है। और मेरे को एक्चुअली आदत नहीं है ऐसा टॉक देने का, डॉक्टर सांखे ने मेरे को रिक्वेस्ट किया तो मैंने प्रयास किया कुछ बोलने का। मुझसे कुछ भी गलती हो या मैंने बराबर से एक्सप्लेन करने में मेरे से तकलीफ हुई हो तो सब मुझको पार्डन कर सकते हैं। Dr. Sankhe, you can your closing remarks. Yeah. So thank you very much, Nikhil, for a very insightful presentation on Pandharpur Act and very good clarity on your thought process, which I know Nikhil for several years now. He's a very good thinker and a very devout dharma person. So naturally the presentation was in line with that his personality. He selflessly works for this, taking out time and energy. For several years I have seen him. So thank you, Nikhil, for this. And in Pandharpur particularly, he has been taking a very pivotal or very catalytic role to get the things together, putting the teams together. And probably this was our first attempt to sort of get more clarity on the Pandharpur issue, because Pandharpur issue is not just legal. Legal battle will be fought and legally
We are very confident that we will win. But that is not sufficient. A lot of internal churning, a lot of perception management, real perception. जैसे एक ही बात बताता हूँ कि जो हजारों साल से जिस प्रकार की परंपरा चल रही है वो परंपरा से अभी तक विठ्ठल रुक्मिणी का जो जिस प्रकार से सेवा होती है, महोत्सव होते हैं, यही एक सफिशिएंट साक्ष्य है कि मंदिर बराबर चल रहा था और आगे भी चलेगा और इसी माध्यम से चलेगा। क्योंकि जो पेड एम्प्लॉयज होते हैं उनका इंटरेस्ट इज फॉर पेमेंट। अगर कोई पेड एम्प्लॉय है जो कि पुजारी बनता है या सेवा करता है, कोई एसओपी नहीं है कि भाई पहला दही डालो, फिर ये डालो, फिर फूल चढ़ाओ, फिर जनोई लगाओ, फिर वस्त्र, बस हो गई पूजा। ये जिसका पूजा का मानसिकता है वो धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। जैसे महेश आचार्य जी ने बताया कि इस प्रकार से जब कोई कार्य भगवान के मंदिर में होता है तो नेचुरली केवल उस परिसर में नहीं, लेकिन उस राष्ट्र जो राज्य करता है उसके ऊपर भी उसका परिणाम होता है। और इसीलिए ये एक बड़ा आंदोलन जैसे ही बनना चाहिए। और हम आप विराट हिंदुस्तान संगम की तरफ से आप सब लोगों को ये एक प्रकार की विनती करते हैं कि आप इस आंदोलन में जुड़े, सोशल मीडिया पे जुड़े, लोगों से बात करके जुड़े। क्योंकि जो आज पंढरपुर के साथ हो रहा है वो कल आपके दूसरे लोकल मंदिर के साथ भी हो सकता है, किसी भी मंदिर के साथ हो सकता है। और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अनुसार ये गलत ही है, लेकिन गलत चीजें करके उसके ऊपर एक्ट का स्टैंप लगाना, ये सब ये पॉलिटिशियंस तब कर सकते हैं जब जनता सोई रहती है। तो अभी जागने का समय आया है और यही मैं कहूँगा कि आज से इसके ऊपर थोड़ा और विशेष करके हमारे जो पंढरपुर के सहायक हैं, वहाँ अच्छी एक यंग टीम है, उनको सब फिर से जुड़िए। 11 और 12 तारीख को हम लोग मोस्टली विल रीच देयर, तभी मिलेंगे ही सबको। और इसका एक जन आंदोलन भी शुरू होगा और एक लीगल आंदोलन भी शुरू होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच निखिल, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस एट विराट हिंदुस्तान संगम। कैन वी हैव द नेशनल एंथम? Please stand. वन्दे मातरम् सुहासिनी वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्